everyone. I welcome you all to RKP online classes. Today we are going to continue our topic, that is soil. In previous video we have covered the topic what is soil, how is soil formed and soil profile and what does soil contain. Today we are going to do the topic soil erosion. What we are going to do? Soil erosion. What do you mean by word erosion? Soil erosion. It means carrying away of soil. Carrying away of soil. Top layer of soil. Sorry. Carrying away of topmost layer of soil by the action of wind or water. ये क्या बोल दिया मैंने? कुछ नहीं समझ में आया है ना? Let us do it again. If you are standing in a field or you are standing in a road, suddenly बहुत तेज हवा चलने लगी, आपकी आईज में कुछ आने लगता है. क्या आता है? बहुत सी मिट्टी आ जाती है, राइट? It means when heavy winds blow, the soil blows from one place to another. मिट्टी उड़ने लग जाती है, right? This is what soil erosion. इरोड होना मतलब अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे चले जाना, बिकॉज ऑफ विच द क्वालिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस. वाई? क्या होता है ये बेटा? व्हेन हेवी विंड्स ब्लो यू एक्सपीरियंस दैट सॉइल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सिमिलरली जब रेन आती है या कोई वाटर फ्लो कर रहा होता है, इट कैन ऑल्सो टेक द सॉइल अलोंग विद इट. फील्ड्स में अगर आप देखो कि अगर रेन आए तो फील्ड्स का पानी जहाँ जा रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है. वाई? बिकॉज जो ऊपर से सॉइल होती है वो सारी फ्लो हो जाती है वाटर के साथ, राइट? तो जब भी हेवी विंड्स ब्लो करेगी या हेवी वाटर फ्लो करेगा तो सॉइल नीचे से तो फ्लो नहीं करेगी, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर फ्लो करेगी, राइट? सो दिस इज व्हाट सॉइल इरोजन. यही मैंने इंग्लिश में बोला, कैरिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर. क्लियर? सॉइल इरोजन, सॉइल का खराब होना. नाउ व्हाई वी से दैट ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर सॉइल erodes? Because in the previous video we have done that top layer of soil contains humus which is rich in nutrients. मीन्स टॉप लेयर ऑफ सॉइल ही सॉइल की क्वालिटी बनाता है, बिकॉज टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ओनली कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द एसेंशियल मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो अ हेल्दी क्रॉप, टू ग्रो अ गुड क्रॉप. क्लियर? बिकॉज सॉइल इज मोस्टली यूज टू ग्रो द ट्रीज, क्रॉप्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. बट इफ वी से दैट वी कैन ग्रो एनीवेयर प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप, डेजर्ट में भी जाके ग्रो कर सकते हैं? नो. टू ग्रो अ हेल्दी क्रॉप, टू ग्रो अ हेल्दी प्लांट और ट्री, वी नीड हेल्दी सॉइल. एंड इफ सॉइल इज नॉट हेल्दी, द प्लांट विल नॉट बी हेल्दी. हाउ द सॉइल कैन बी हेल्दी? इफ इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. एसेंशियल मीन्स important. And all the essential materials of the soil is present in topsoil. But what happens when wind blows or water blows, the top layer of the soil gets washed away with water or blows away with wind. So what happens? The quality of the soil decreases and the soil will not be able to grow good quality of crop or tree. उस soil में आप अच्छी से नहीं ट्री ग्रो कर सकते या क्रॉप. अगर आप वही वाली सॉइल में क्रॉप ग्रो करोगे देन इट विल नॉट बी अ हेल्दी क्रॉप. क्लियर? सिमिलरली जब फ्लड आती है और हेवी रेन की वजह से रिवर का फ्लो भी तेज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन माउंटेनियस एरिया, यू मस्ट हैव हर्ड नाउअडेज इन न्यूज दैट हेवी रेन वाटर मीन्स फ्लड्स आर देयर, स्पेशली इन माउंटेन्स एरिया. माउंटेन एरिया में क्या होता है बेटा? सपोज इट इज माउंटेन्स, heavy rains are there. Thus, if mountain is not covered with so many of trees, the soil will be washed easily. यहाँ पे पानी आ रहा है तो soil बहुत easily नीचे आएगी because of the gravitational force. Clear? Everything comes down with due to gravitational force. Clear? So all the soil is coming down and this rain water ultimately
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी सॉइल यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी. सो ऑल दिस, all the minerals, all the nutrients which were present in this area get washed away due to heavy rain, and soil gets eroded, means carried away, top layer of the soil carried away with rainwater. And suppose this water goes to meet river, river में चला गया, the soil also, where will soil go? When the flow of water will become slow, the soil particles will settle down. When inside the river the soil part, suppose यहाँ तक थी पहले soil and this was the level of water, okay, then यहाँ से river में soil आती गई because of soil erosion. It will settle down when the flow will become slow. यहाँ पे settle होगी. Now what will happen? This much area is of only water. Because of this, the level of the water will increase and it may leads to floods again. Because of the accumulation of soil, accumulation means इकट्ठा होना soil का at the bed of the rivers, means bottom of the rivers or lakes, the level of the water increases, which can go towards the land, it can damage everything coming in its path, which may lead to floods. So this is soil erosion, means carrying away of soil by the action of wind or water. Clear? Now you will say that, ma'am, wind, rain, these all are the natural things, we cannot stop it. हम विंड को ब्लो करने से स्टॉप नहीं कर सकते, हम रेन को स्टॉप नहीं कर सकते, तो सॉइल तो खराब होगी. देन हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दैट? Before doing that, how can we protect that? You should know that why the soil erosion occur. Soil erosion occur because, before doing this topic, I'll give you one example. Heavy winds are blowing, 2 fields are there near around your house. In one, nothing is grown, खाली छोड़ रखा है उस field को, but in another field, crops or plants or grass is there. Suppose grass ही grow कर रखी है. एक फील्ड है, फील्ड भी छोड़ो, एक गार्डन की बात कर लेते हैं, लॉन की बात कर लेते हैं, एक बिल्कुल खाली है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी ऐसे पड़ी है. सेकेंड, ग्रास इज देयर. क्लियर? नाउ यू विल टेल मी दैट अगर हैवी रेन हुई या फिर हैवी विंड्स ब्लो कर रही है, तो सॉइल कौन से वाली फील्ड में से, कौन से वाले गार्डन में से ज्यादा कैरी अवे होगी? एम्प्टी वन और ग्रास वन. राइट डाउन योर आंसर. एम्प्टी वन में से ज्यादा सॉइल विंड के साथ ब्लो करेगी या वाटर के साथ फ्लो करेगी, या गार्डन जिसमें ग्रास ग्रो हो रही है उसमें से? योर आंसर विल बी एम्प्टी वन. जो एम्प्टी गार्डन था, एम्प्टी फील्ड थी, उसमें से सॉइल ज्यादा कैरी अवे होगी या ज्यादा वॉश अवे होगी. सो सॉइल इरोजन किस में ज्यादा हुआ? एम्प्टी फील्ड में. व्हाई? बिकॉज जिस फील्ड में ग्रास या प्लांट्स ग्रो हुए थे, इन दैट फील्ड वी ऑल नो that roots of the plants are below the ground. Roots of the plants are below the ground, and we all have done that. Roots hold the plant tightly in the soil. When the roots are holding the plants tightly in the soil, it means they are holding the soil also tightly. Clear? So soil को भी hold कर रखा है plants के साथ. So if heavy wind will blow, the soil will not be carried away in a large amount because of the plants or grass. कोई भी type का plant है, even it is grass, they have roots. Roots will hold, bind the soil tightly, so with the effect of heavy winds, they will not blow away. What happens if heavy water will be there, rain water? When suppose heavy water आया, heavy rain हुई, but water empty जगह पे ज्यादा तेज flow करेगा या filled जगह पे? Obviously empty जगह पे. But if यहाँ पे grass, plants are plants, then flow of water will be slow, as well as the soil is very tight, water will go inside the soil in a less amount, and then soil, the roots will absorb the water also, so, and flow of water will be slow also. That is why
very small amount of soil will be carried away along with the flow of water. So in this way, plants hold the soil tightly, which do not allow soil to be carried away. Clear? So the first reason is in this activity only, which I have told you, that one of empty field and field with grass. Empty garden और garden जिसमें grass थी, किसमें ज़्यादा soil erosion हुआ? Empty one. It means if the plants are not there over the soil, और अगर खाली छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा है garden, it means definitely soil erosion will be there. And this is the only and the main reason of the soil erosion, because human beings are cutting down the trees in a large number because of their personal use to get the products of the trees, but they are not growing as much as they are cutting. जितने trees cut कर रहे हैं उतने grow नहीं कर रहे. For example, today they have cut 10 to or 15 trees from a area, so they have not grown there any, so that place will remain open. So open place will there, soil will not be held by anything, so definitely it will be carried away. So the first reason of the soil erosion is deforestation. This we have done earlier, this word. What do you understand by the term deforestation? Deforestation means cutting down of trees in a large number. Cutting down of trees in a large number. Second reason is, suppose a field is there where grass is there and some animals are moving here and there, especially herbivores, deer, cow, ox, etc. So what will happen? They will go inside the field, they will eat the grass. Okay? But what if they are eating and eating and eating continuously? When they will eat continuously, then what will happen? The grass, they will uproot the roots. Means वो roots को भी बाहर निकाल देंगे, इतना eat कर लेंगे. जब roots बाहर आ जाएंगे तो soil will again remain open. Soil will become loose. Loose soil will be carried away easily by the wind or water. So the second main reason is overgrazing. Second main reason is overgrazing by animals. So these are the two main reasons of soil erosion. So what we have done till now, we have done the causes of soil erosion. Two types of causes are there: natural and human activities. Natural activities and human activities. Natural activity is heavy winds and heavy flow of water. Human activity is deforestation and overgrazing. You will say that overgrazing is done by animals, but humans can control that. They can control the animals entering into the fields, or they can protect the fields from the animals. So this was all about soil erosion, and in next video we will do how to protect the soil from being eroded. So what is your work to do? You have to explain how soil erosion occurs and what are the effects of soil erosion. Soil erosion के effect क्या है, means क्या harmful things होती है because of soil erosion. Clear?